Good afternoon to all. So today we'll start the geometrical interpretation of scalar products. The geometrical interpretation of the scalar products. The scalar product आम पढ़ी तार geometrical interpretation. तो केमती बाहर scalar product तार geometrically बाहर करिया. Now suppose you draw and make. Suppose this is O and P, and this is represented by my OA vector, and this is represented by my B vector, and they are making angle theta with each other. तो A vector और B vector दी जण theta angle बनाउछन्ती दी जण को भितर A और B vector, so they are making angle theta with each other. Then this is my OR. So this component, this OR will be A cos theta. So I can write, suppose two vectors A vector and B vector are represented by OP vector and OQ vector. Suppose two vectors A vector and B vector are represented by OP vector and OQ vector. Okay. Then A dot B vector कितना हो? A dot B vector will be AB cos theta. So this I can separately write A into B cos theta. Okay. A into B cos theta. So what is B cos theta? This is component of this OR. First you can write this is OR. And OR कौन? Now OR is the component of B vector in the direction of A vector. So this is A into component of B vector in the direction of A vector. So component of B vector along the direction of A vector. So this is my OR. Next we will study the physical interpretation, physical example of the scalar product of two vectors. Physical examples of scalar product of two vectors. Physical example of scalar product of two vectors. तो कोटी scalar product हमारे physics रे यूज होज. First work done. Work done W. So it is defined as the scalar product of force with displacement. So it is defined as the scalar product of force acting on a body, okay, which produces a displacement in the body, and the displacement produced and the displacement produced.
So you can write W equal to F vector dot S vector. So suppose this is a body and your force is acting here and the body is displaced to here. So this is distance S. The force is acting like this and this is angle theta. Okay. So the displacement is S. So the component will be, this component will be Fs, F cos theta. So the force will be Fs cos theta. Okay. So ये हमें देख पारे वर्क डन कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट इज इंस्टैंटेनियस पावर. Instantaneous power. Instantaneous power कौन? Now it is defined as scalar product of force with the instantaneous velocity. It is defined as the scalar product of force. The scalar product of force with the instantaneous velocity. With the instantaneous velocity. So this is defined as instantaneous power. So P you can write F dot V vector. Okay. So instantaneous power is F dot force into the instantaneous velocity. Next, magnetic flux. So it is defined as the number of magnetic lines of force, the number of magnetic lines of force passing through a given area of cross section, passing through a given area of cross section. So I can write phi equal to B vector magnetic field vector dot area vector. Okay. So these are some examples जोड़ा तुमर कोठी यूज होचे ना स्केलर प्रोडक्ट रे यूज होचे. ओके. मैग्नेटिक फ्लक्स हो, पावर हो कि वर्क डन हो. So in this case we are using the scalar product of the vectors. Next is properties of the scalar product. Properties of scalar product of two vectors. First is the scalar product is commutative. The scalar product is commutative. So this means A dot B vector is equal to B dot A vector. So this is scalar product is commutative. Next is the scalar product is distributive over addition. The scalar product is distributive over addition. जदि तुम A vector into B vector plus C vector. Suppose तुम एमती नौ A vector into
b vector plus c vector. This will be a vector dot b vector plus a vector dot c vector. So this is distributed over the addition. Okay, the b vector first में multiply करियो, next plus a vector dot c vector. So this is distributive in nature. Next, if a vector and b vector are two vectors perpendicular to each other, if a vector and b vector are two vectors perpendicular to each other, then I can write a vector dot b vector is equal to ab cos 90 degree. So this is equal to 0. So you will get 0. Finally product में कौन पाएगा 0 पाएगा. जैसे a vector और b vector कौन होता है दीटा वेक्टर होता है जोड़ा परपेंडिकुलर होते हैं. सो a वेक्टर जैसे एमती था b वेक्टर जैसे एमती था देन तार स्केलर प्रोडक्ट केते हो ना स्केलर प्रोडक्ट विल बी 0 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Next, if a vector and b vector are two parallel vectors, if a vector and b vector are two parallel vectors, okay, a vector और b vector जब दीटा parallel vector होइतंदी and acting along the same direction, a vector जो direction ले act करछि b vector सही direction ले act करथु and acting along the same direction, then theta केते हियो तांको भीतर एंगल 0 डिग्री. So I can write a vector dot b vector is equal to ab cos 0 degree. So this will be ab. So कौन पाइबो ना a dot b vector will be equal to ab has the maximum magnitude, that is ab. So this is the maximum magnitude. Fifth, if a vector and b vector are two parallel vectors, and acting along opposite direction, then कौन होगा ना a vector dot b vector, this will be now what will be angle between a vector and b vector. Suppose a vector एपटे act करछि b vector एपटे act करछि opposite direction, तांको भीतर angle केते हबो 180 degree. So a vector dot b vector, this will be ab cos 180 degree. So this will be minus ab. So this is negative maximum. Okay, so this I can write maximum negative magnitude. It has maximum negative magnitude. Next करिबा the scalar product of vector with itself. The scalar product of a vector with itself.
is what हो a vector dot a vector, this will be a into a cos 0 degree, so this will be a square, so this is a vector magnitude square. Okay, this will be the scalar product of a vector with itself. Okay, this will be square of this given vector. Next बार करिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर बेस वेक्टर. Scalar product of two similar base vector. Will be unity. हाँ दीटा जति मो सिमिलर बेस वेक्टर ने भी तार स्केलर प्रोडक्ट कौन हो सब बड़े वन हो केमती ना आई कैप डॉट आई कैप दिस विल बी केते जे कैप डॉट जे कैप दिस विल बी के कैप डॉट के कैप एटा सब बड़े मोर कौन हो यूनिटी हो वन हो. ओके तो बिकज मुझे आई कैप डॉट आई कैप नौ आई कैप मैग्नीट्यूड 1 and I cap magnitude 1 and angle between them is 0 degree, so this will be 1. Clear? Similarly J cap रे जितने भी तार magnitude 1 आसीबो J cap dot J cap तार 1 into 1 cos 0 degree 1 हो. Okay, and two different base vectors जितने भी similar vector नेले unit हो. For two different base vectors, for two different base vectors, their product I cap dot j cap, this will be 1 into 1 cos 90 degree, so this will be 0. Similarly j cap dot k cap will be 1 into 1 cos 90 degree, so this will be 0. Okay, so I cap dot j cap dot k cap dot I cap, this will be all 0. Next, the scalar product of two vectors a vector and b vector. The scalar product of two vectors a vector and b vector will be केते हो स्केलर प्रोडक्ट a vector जति कंपोनेंट थिवो and b vector जति component थियो, so is sum of the products of their corresponding rectangular components. The sum of components of their corresponding rectangular components. ना एक्स ए रती कंपोनेंट थी धर ए वेक्टर तुम्हें नेल सपोज ए वेक्टर यू आर टेकिंग ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. ओके तो यार कंपोनेंट जी से एक्स ए वाई ए जेड एंड बी वेक्टर जी तुम्हें नेल बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, देन ए वेक्टर डॉट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर केते होबो दिस विल बी द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. ओके ओनली द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट विल रिमेन. नेक्स्ट द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. So cos theta केते हो ना this will be a vector dot b vector divided by कौन हम divided by यार magnitude. So a vector magnitude b vector magnitude
तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तुम बाहर कर एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए फास्ट थर मुझे ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बाहर करी के मैग्नीट्यूड सो यार स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर रूट ओवर इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर रूट ओवर so this will be my cos theta okay so a dot b vector divided by a vector magnitude with along with b vector magnitude तो मोर कौन आसो ना एंगल पळे आसो दुटा कंपोनेंट विषय now scalar product of two vectors a vector and b vector is always commutative this we will prove scalar product of two vectors scalar product of two vectors a vector and b vector is commutative जदि तुम ए वेक्टर एटा नियो बी वेक्टर एटा नियो एंड एंगल तंग भीतर थीटा होता है तार मैं लिख पारि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ओके एटा मैं लिख पारि सो दिस इज माय इक्वेशन 1 ए बी कॉस थीटा नाउ व्हाट विल बी द दिस एंगल दिस विल बी 360 माइनस थीटा 360 minus theta so theta कौन ना theta is angle between a vector and b vector now b vector into a vector जब हम करी b vector into a vector कितना हो b vector a vector से कितना एंगल करछि कितने 360 minus theta so लिख परिबा b a cos 360 minus theta तो cos 360 minus theta cos 2 pi minus theta is always cos theta so cos 2 pi minus theta is cos theta so here cos 360 minus theta तो এটা कितना होगा ना cos theta so ba okay cos 360 minus theta so this will be cos theta so ba cos theta so this I can write ab cos theta equation 2 so from equation 1 and 2 we can write from equation 1 and 2 so हमें कौन पहले ना a dot b is equal to b dot a dot b vector is equal to b vector dot a vector so scalar product of vector is always commutative scalar product of vector is always commutative next find the angle between the vectors one problem find the angle between the vectors ए वेक्टर सपोज तुमको देइछि आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर इज गिवन b वेक्टर माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप तो आमको पचार एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बाहर कर फास्ट काम है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड केते हो सेटा बाहर कर केते आसो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर
So this will be 1 plus 4 plus 1. So this will be root 6. केते आसीओ root 6. Similarly b vector रो magnitude बाहर करिया. b vector रो magnitude will be 1 square minus 1 रो square plus 1 रो square plus 2 रो square root over. So this will be 1 plus 1 plus 4. So this will be root 6. Now angle पचार हमको. So angle ला formula कौन? Cos theta is equal to a vector dot b vector divided by a vector रो magnitude and b vector रो magnitude. Okay. So a dot b vector कहते हो a vector dot b vector is equal to I cap minus 2j cap plus k cap. एक डॉट करिवा का सहित ना माइनस I cap plus j cap plus 2k cap. So को कंपोनेंट उडा रहउची I cap dot minus I cap केते हो minus 1 plus एटी केते हो minus 2 into 1 minus 2 into 1 plus 1 into 2. So this will be minus 1 minus 2 plus 2. केते हो तो minus 2j cap plus k cap minus 2j cap I cap plus 2j cap minus k cap. This is plus 2j cap minus k cap and minus I cap plus j cap minus 2k cap. Okay. तो एटी हिजबो तो 1 square plus 2 रो square plus minus 1 रो square. So this will be right root 6 and this will be also root 6 minus 1 रो square plus 1 रो square minus 2 रो square root 6 and this will be I cap plus 2j cap minus k cap minus I cap plus j cap minus 2k cap. So this will be देखो 1 into minus 1 minus 1 2 into 1 2 minus 1 into minus 2. So this will be minus 1 plus 2 plus 2. So this will be 3. So here you can write a dot b is equal to 3 by a magnitude b magnitude is root 6 into root 6. So 3 by 6. So cos theta is half. So theta will be, so this is cos pi by 3. So theta is 60 degree. So theta value तुम्हें कहते पाएगा 60 degree. Okay. Next, two vectors a vector, two vectors a vector given दीजिए 5 I cap plus 7j cap 5 I cap plus 7j cap minus 3k cap and b vector given is 2 I cap plus 2j cap minus alpha k cap 2 I cap plus 2j cap minus alpha k cap. These two are given. So here asked question कौन पचारछि ना they are perpendicular to each other. So what is the value of alpha? They are perpendicular to each other. What is the value of alpha? What is the value of alpha? So what is the meaning of perpendicular? And तांका भीतर केते एंगल अछि 90 डिग्री. So जदि मु a vector निये b vector निये a vector dot b vector, this will be a vector of magnitude b vector of magnitude cos 90 degree if they are perpendicular.
सो cos 90 डिग्री गले केते हो जिवो a वेक्टर डॉट b वेक्टर मोर हो जिवो 0. सो दिस इज द कंडीशन हियर. सो कंडीशन कोन a वेक्टर और b वेक्टर मोर 0 होबो. सो a वेक्टर केते दीजी गिवन. सो a वेक्टर गिवन इज 5 i कैप प्लस 7 j कैप माइनस 3 k कैप डॉट b वेक्टर केते दीजी 2 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस अल्फा k कैप इज इक्वल टू 0. So this will be 5 into 2 10 plus 7 into 2 14 plus minus 3 into minus alpha is equal to 0. So 14 plus 10 24 plus 3 alpha is equal to 0. So alpha is equal to 3 alpha is equal to minus 24. So alpha is equal to minus 8. So alpha value केते आसियो minus 8. ओके. सो अल्फा वैल्यू आसियो केते minus 8. अंडरस्टैंड बुझी गला. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए फोर्स ऑफ 7i कैप प्लस 6k कैप a force of 7i cap plus 6k cap Newton makes a body move with a velocity of 3j cap plus 4k cap. Body to move with velocity 3j cap plus 4k cap मीटर पर सेकेंड. देन से पचारि कैलकुलेट द पावर इन वाट. कैलकुलेट पावर इन वाट. कैलकुलेट द पावर इन वाट. तो फास्ट पावर फॉर्मूला कौन आम से बाहर करिया. सो पावर वी नो इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी. सो फोर्स मत देदेला 7i कैप प्लस 0j कैप प्लस 6k कैप. जो मोर j वैल्यू किसी ना से मुझे नहीं कौन 0 डॉट 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. सो डॉट प्रोडक्ट बाहर करो 7 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4. सो केते पाइल 24. सो 24 वाट आंसर विल बी पावर विल बी 24 वाट. ओके. दिस इज क्लियर. Okay, everyone clear? Next is if a vector plus b vector of magnitude, if a vector plus b vector of magnitude is equal to a vector minus b vector of magnitude. Okay, a vector plus b vector magnitude is equal to a vector minus b. Find the angle between a vector and b vector. Then find angle between a vector and b vector. So this is my question. Question एटा मते given देछ. तो given मते देछि. तो फास्ट मुझे कौन करुँगी ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर कर दूसरी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर कर दूसरी. तो यहाँ के ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ये के ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर. So this will be a square
प्लस बी स्क्वायर बोथ साइड रू कटिज के ना 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0. सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोर हो इक्वल टू 0. सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माने कौन ना ए बी cos theta. So a vector dot b vector means a b cos theta. So this will be a vector dot b vector is equal to a b cos theta is equal to 0. So theta रा को वैल्यू पाई 0 हो जिवो. So theta will be 90 degree. So it तुम कौन जान लो theta is 90 degree such that a dot b vector this will be 0. So it हमें जान ले a vector और b vector दीटा नॉन जीरो vectors and they are also perpendicular to each other. So here a and b vector will be perpendicular to each other. A vector and b vector will be perpendicular to each other. Okay, thank you. In the next class we will discuss other parts, the vector products and scalar products. Next class रे vector product पर पढ़िबा. Okay, thank you.